Assalamu alaikum. I'm Dr.Seema Hashmi. I'm a professor of pediatric nephrology here at SIUT and proudly associated with this institute for many, many years. Today I'm going to talk about coronavirus in children. Beside this talk, which will take another next 30 minutes, you can ask any questions. If you just write down your comments, I can take your questions one by one and try to answer. And even after 30 minutes, if you still have other questions, you can just wait and I will answer later on. Wa alaikum assalam. Okay, so the reason for this talk is too many people have questions about coronavirus in pediatric population. So we would need to revise, we need to go back about this, the basic introduction, which everybody is aware of, but just for the reminder, you know that this pandemic started in December 2019, and within few weeks or month, it spread the whole world, right? It's a relatively new virus, which we also call it severe acute respiratory syndrome virus. Okay? It's spread through droplet, which means that if somebody sneeze or cough, किसी को खांसी आएगी, किसी को नज़ला होगा, अगर वो water droplets नाक से या मुंह से बाहर निकलेंगे, so they drop on the floor and on the surface nearby for at least 1 meter or 3 feet distance, according to WHO. But some universities says that 6 feet is the same safe distance, and that's how the concept of social distancing came into picture. कि अगर आपको, even if you are infected and if you keep the distance from yourself and others, the likelihood that someone else get infection is very less. Okay? The other route of spread is basically through the surfaces, as we are aware that अगर किसी के droplets किसी surface पे भी गिरेंगे, for example, if I'm sitting here and these viruses stay on the surface for few hours, depending के कहाँ गिरें, ठीक है? So if I touch that surface, then definitely my hand will be infected. And in one of the study conducted in Australia showed that an average person can touch his or her face at least 20 times in an hour, which means 400 times in one day. So you can imagine this is why we can ask you to wash your hands frequently or at least sanitize yourself. ठीक है? Sanitize your hand. So अगर आपने touch भी किया है वो surface जहाँ पे virus है, so if you sanitize, if you wash your hands, then likelihood that you will wash that virus away and not infecting yourself. So these are the primary two modes of transmission जो कि अभी तक very well known है. The third, somebody was asking yesterday whether it is possible कि mother अपनी baby को ये transfer करे during pregnancy or at the time of delivery. The answer is no. So far, we don't have any evidence that this virus is in amniotic fluid, the fluid जो baby के surround करता है when the baby is in tummy, or in the breast milk. So अभी तक intrauterine transfer is not there. ठीक है? So these two modes जो मैंने पहले बताए थे, so we have to make all the precautions around these two modes of spread. We'll take the question side by side. So somebody was asking that if transplant patient is diagnosed with COVID-19, what are the instructions for him? Okay, my advice even for children and for adults as well, okay, if you are exposed and if you are confirmed COVID-19 or coronavirus patient and you have a history of transplantation, do come to the hospital and seek medical advice, and your clinician will assess you which category your child or yourself, if you are an adult, आप किस category में fall करते हैं, and definitely they will advise you accordingly. ठीक है? Do not sit at home because you are already on medication, which damps your immune response. So you don't have a capacity to combat or लड़ने की वो ताकत, कुव्वत मुदाफ़त आप में इतनी नहीं है जितनी एक normal person में है. So do not sit at home, just come to us. ठीक है? बच्चों के अंदर coronavirus is relatively less. We don't know why. Theories are there. कुछ लोग इसको immunity से relate कर रहे हैं, कुछ BCG vaccination से relate कर रहे हैं. एक major reason ये भी हो सकता है कि just like in older population जिनमें comorbidities ज़्यादा होती हैं, like diabetes, heart diseases, lung diseases उनमें ज़्यादा है, बच्चों में ये
disease is relatively unheard of. ठीक है, so that's why they are safe, or their own immunity is preventing them. We still don't know, but we are learning. As of 2nd May 2020, when Sindh was reporting 7,000 figure of coronavirus confirmed patient, 253 were pediatric population. ठीक है, और उसके अंदर 10 महीने का एक बच्चा भी शामिल था. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि all children are immune, या किस बच्चे को होगा और किस बच्चे को नहीं होगा, we still don't know. We as a pediatric nephrologist, because हमारे जो kidney diseases के patient होते हैं, they are immunocompromised. चाहे नेफ्रोटिक्स हों, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हों, चाहे ट्रांसप्लांट के हों, so their immunity is very low and they are on medication which suppress the immunity further. तो वो बहुत susceptible होते हैं. But I can tell you, for the last 4 months, we are in contact with almost all pediatric nephrologists across the country, and we haven't seen or heard of any positive patient in our practice. We had a suspicion, so we checked them even at SIUT, but none of them came positive. So that was, alhamdulillah, आप कह सकते हैं, good news for the kids, that relatively low incident in this population. We can take more questions if you want to ask. Acha. Just like in adult population, symptoms are same. बच्चों को बुखार होगा, cough होगी, sore throat होगा, खाने में प्रॉब्लम होगी, swallowing में डिफिकल्टी होगी, एंड सांस लेने में दुश्वारी होगी, जिससे हम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द सेम सिम्टम्स. 10% बच्चों में डायरिया वॉमिटिंग भी हो सकती है, एंड कुछ बच्चों में सर्दी लग के बुखार भी आ सकता है. तो ऐसा नहीं है कि सर्दी लग के बुखार आ रहा हो तो यू ऑलवेज एट्रीब्यूट दैट इलनेस टू मलेरिया. ठीक है, सो कीप योर antennas open and keep yourself alert कि इस बच्चे को infection COVID-19 भी हो सकता है. Depending on the severity of the symptoms, ठीक है, सारे बच्चों को hospitalization की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, so अगर हम pediatric population को लेते हैं तो उनको हम उनके clinical symptoms के accordingly 4 varieties में divide कर देते हैं, categories जिसे आप कहते हैं. They can be asymptomatic, which means that they are infected but they have absolutely no symptom. ठीक है, ना fever होगा, ना cough होगा, they are running around with full energy. You will not even know कि इनको infection हुआ. ठीक है, these are asymptomatic category. Mild infection जिसके अंदर low grade fever होगा, 100.4, 100.7, mild से cough होगी, थोड़ा सा sore throat होगा, difficulty in breathing बिल्कुल नहीं होगी. If you do the X-ray will be perfectly fine. ठीक है, so ये दो जो category है, asymptomatic and milder category, they can be isolated at home. ठीक है, अगर आपके घर में facility है for isolation, which means that they need a separate room with a separate bathroom. ठीक है, but having said that, it's not easy कि हर घर में ये facility available हो कि एक separate room और separate bathroom से एक बच्चे के लिए आप मुख्तस कर दें. For those cases, though, don't have isolation area in home, they can contact with the government facilities of isolation. ठीक है, but you have to monitor the symptoms. ऐसा नहीं है कि milder category cannot become severe category, या moderate category or severe category. So you have to follow them up next 7 to 10 days illness में. The third category जो है वो moderate category कहलाती है, जिसके अंदर fever would go up, maybe 102, 103, some difficulty in breathing, may or may not need oxygen, but अगर आप X-ray कराएंगे तो उसके अंदर आपको evidence of infection मिलेगा. ठीक है, and the next category would be a severe category, जिसके अंदर ये सारी अलामात और ज़्यादा serious हो जाएंगी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, fever high grade हो जाएगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि ये एक अलामत होती है कि बच्चे को सांस लेने में मसला हो रहा है. In that case, you have to rush to the hospital. Both moderate and severe category need hospitalization. ठीक है, because they need urgent monitoring. They can be from moderate, severe में convert हो सकता है, and severe means they need ICU care. ठीक है, एंड सिवियर में कुछ डेंजर साइंस कहलाते हैं जो कि सिवियरिटी को इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर बच्चा बहुत लेथार्जिक हो जाए, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाए, सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो जाए, विच मीन्स कि बच्चा सो रहा हो, अगर आप उठाने की कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं उठ रहा है,
ग्रंट करने लगे, चेस्ट एंड ड्राइंग होने लगे, ठीक है, एंड शॉक लाइक स्टेट हो जाए. सो दैट टेल्स यू कि सिवियरिटी ऑफ द डिजीज या इन्फेक्शन इसके अंदर comparatively mild or moderate category के बहुत ज़्यादा है. And of course, your ICU doctor will decide कि what treatment he needs, ventilation चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है. अगर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक कैटेगरी है, सो ऑल यू नीड कि घर में आप पैरासिटामोल दे दें, आप हाइड्रेट रखें बच्चे को, एंड इफ यू नीड टू गिव एंटीहिस्टामिन, यू कैन गिव एंटीहिस्टामिन, ठीक है. Other than that, you can just monitor and keep your doctor updated about the symptoms of the child, ठीक है. We don't have any more questions here, so we can continue our talking. Acha, I'll take a pause here, and I want to use this platform. I want all of you to know about coronavirus facility as SIOT. We started screening and proper PCR testing in March 2020. We have designated isolation for a coronavirus infected patient, and also designated ICU, which is very well equipped ICU for these patients. And this basically team is led by Dr. Adibul Hassan Rizvi, and our team, which is doing commendable job, our infectious disease specialists, our pulmonologists, our intensivists, our anesthesia, and almost every department of SIUT are taking part to combat this infection. And this was made possible because of your donations, because of your zakat, and because of your support to SIUT. So this is the month of Ramzan. If you want to continue your help, if you want to send your zakat, so please contact us and help us in fighting this pandemic. Okay, let's coming back to the main topic of coronavirus infection. I ask you to, if you have any question, you can just put it up and you write down the comment, and then I can answer. There are few terminologies which we use, like self-isolation, quarantine क्या होती है, social distancing क्या होती है. Social distancing पे तो अभी हमने बात की थी कि उसका concept किस तरह emerge हुआ. Isolation means that अगर कोई बच्चा सिम्टोमेटिक है, अभी आपको पता नहीं है कि उसके अंदर COVID-19 का इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है, सो यू जस्ट कीप देम आइसोलेट फ्रॉम, अलग करते हैं उसको घर वालों से, ठीक है. बच्चों में आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट इजी जॉब, ठीक है. एक बच्चे को किसी एक कमरे में बिठाना एंड आइसोलेट कर देना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज रियली रियली डिफिकल्ट जॉब, स्पेशली फॉर द मदर. बट दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड कि आपने उससे डिस्टेंस रखना है एटलीस्ट अ मीटर, इफ नॉट 2 मीटर, ठीक है. वेयर अ मास्क, you have to do hand hygiene, that frequent washing of hand, use of sanitizer, and also respiratory hygiene. What that means that if the child is coughing or sneezing, he should sneeze or cough with a flex elbow like this, ठीक है. और अगर टिश्यू पेपर है और उसके अंदर स्नीज और कॉफ कर रहा है, that tissue paper should be thrown into the dustbin and wash your hands later on, ठीक है. So ये respiratory hygiene है, ये otherwise भी recommended है, but especially for those who are in isolation and quarantine. You have to stay there for at least 14 days in isolation, whether at home, especially बच्चे को लेके, या फिर at certain areas which are designated areas by the government, ठीक है. Quarantine is different, that you are not infected, but you have been exposed by somebody who's infected. So just for the sake कि आप spread ना करें, because we are not sure about your status, you quarantine yourself and आप isolate हो जाते हैं 7 to 14 days तक. And then if you are not showing your symptoms after 14 days, you can just come out and then continue practicing this hand hygiene and respiratory hygiene, ठीक है. Social distancing की हमने अभी बात की थी. I'm sure that everybody is aware of that, and I would emphasize that wherever you're going out, or bache are going out for any reason, make sure they are wearing masks. This is more important than wearing gloves. I've seen people wearing gloves but not wearing masks, because you see, even with the gloves, you can touch the surface with the virus on, and you can touch the glove hand with glove hand आपने अपने मुंह पे लगा दे, ठीक है. This is a possibility, but if you are covering yourself, your nose, your mouth is covered,
you won't touch your face, and obviously the chances that even respiratory droplets कोई पास से गुजर गया जो infected था या किसी ने sneeze कर दिया, तो chances that आपके infection को बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है? So continue this practice regardless of quarantine or not quarantine, ठीक है? इसी टॉपिक को लेके एक चीज़ और मैं एम्फसाइज करूँगी कि ऐसा नहीं है कि इस एनवायरनमेंट में बाकी सारी डिजीजेस नहीं है, ठीक है? सो वी हैव अ नंबर ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में इंक्लूडेड है। इट्स 11 डिजीजेस जिसमें टीबी, खन्ना, काली खांसी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, और इनकी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है? सो ऐसा ना हो कि आप इस कोरोना वायरस से या कोविड-19 से डर के घर बैठ जाएं, और स्पेशली दोज हु आर अंडर 1 year of age, इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, प्लीज गो आउट एंड गेट योरसेल्फ, बच्चे को वैक्सीनेट कराएं, ठीक है? बिकॉज दीज आर द प्रिवेंटेबल डिजीजेस और इनकी वैक्सीनेशन है। कोरोना वायरस की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट क्लीन हो गया और बाकी सारी डिजीजेस सरफेस से हट गई हूँ। दिस इज नॉट द पिक्चर। सो माई रिक्वेस्ट for you is to go out and get your child vaccinated, ठीक है? ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स क्या करें? ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को सेम प्रिकॉशंस जो नॉर्मल पेशेंट्स के होते हैं, द सेम होम केयर जो करनी है आपने, स्टे योरसेल्फ अवे फ्रॉम द पीपल, जितना भी आप डिस्टेंस रख सकते हैं, कीप योरसेल्फ एट होम, hand hygiene, respiratory hygiene, and busy yourself. It's not easy. I'm hearing more and more day by day that depression is sinking and people are anxious. Anxiety develop हो रही है, कब खत्म होगा? We still don't know ये कितने last करेगा. So we have to realize it's a long process. ठीक है? तो we have to just make sure that we have to stay positive and keep ourselves energetic. हम पहले कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है अपनी हॉबीज का, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, गार्डन करने का टाइम नहीं है, घर पे टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त नहीं मिलता. सो दिस इज द टाइम यू कैन यूटिलाइज. आजकल रमजान है, यू कैन इंडल्ज योरसेल्फ इन प्रेयर्स एंड डिफरेंट रिचुअल्स. उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है. एंड स्पेशली अगर कोई पॉजिटिव है, एल्डरलीज हैं खास तौर पे, उनके लिए कोशिश करें कि you have to just make sure that you are connected with the loved ones, and through FaceTime, through Facebook, through Skype, different modes are available. अगर ये नहीं available है, तो you can just call them up and then keep yourself connected. So depression ना लें, ठीक है? And if you really cannot help your depression, then seek help. There is absolutely no issue कि अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं कि what medication you can take, it's absolutely fine. Even the doctors are sometimes feel depressed. It's constantly overwhelming situation. हम suffering देख रहे होते हैं यहाँ पे. हमारी अपनी population pediatric nephrology की भी है, but at the same time we are seeing the people who are suffering from coronavirus and COVID-19, they are losing their life. So I think if you see this picture, the depression and anxiety would go down. So just keep yourself tuned and positive and energetic as well. ठीक है? So अपना ख्याल रखें. If you have any question, I'm still asking. You can just put it up here. अच्छा. The other things people were asking, not here, but they asked me that whether the pregnant woman can transfer. I already addressed that. This unlikely that mother with infection can transfer this infection to the baby. ठीक है? एक तो ये चीज़ है. But having said that, what mother should do जब newborn आ जाता है, then obviously how to handle with, because हमने माँ और बच्चे का connection भी establish करना है, बच्चे की breast feeding भी initiate करनी है. तो with all the precautions, ऐसा नहीं है कि mother feed नहीं करा सकती, but obviously you have to discuss all these matters with the family as well, and your जो doctor आपको deal कर रहा है वो आपको बेहतर explain करेगा. But it's better. You can cover your face with a mask. You can cover yourself with the gloves. आप गाउन पहन लें, and then बच्चे के कॉट को, बच्चे के एरिया को आप fully clean करके you can breastfeed the child and then put the child back into the cot. You can still take care of your child even if you are infected. However, if you are serious कैटेगरी या आप मॉडरेट कैटेगरी हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उस सूरत में डेफिनेटली बच्चा आपके साथ नहीं होगा, बट स्टिल यू कैन गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क,
और वो आप घर भिजवा सकते हैं if you are well enough. ठीक है, I'm not saying that you are going towards ICU and then you are expected to give express breast milk. ऐसा नहीं, but if you are well, then you can give milk and send it for the baby. ठीक है, and the bacha will follow the same routine. Um, your doctor will advise when to test your child as well. ठीक है, because we have to keep an eye on your baby as well. If the child is at home, if the child is positive, then definitely he needs hospitalization, because the जो न्यूरोटोलॉजिस्ट होते हैं, जो छोटे बच्चों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, वो एक सटल साइंस मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को इन्फेक्शन किस कैटेगरी का है या नहीं है. एंड देन ऑब्वियसली व्हेन द चाइल्ड is clear of infection after 7 days or 14 days, he will be or she will discharge. ठीक है. So the same messages again and again. Hand hygiene, respiratory hygiene जो आपको follow करनी है. कब तक फॉलो करनी है, कब तक इस तरह घर पे रहना है, वी डोंट नो. ठीक है, बट वी नीड योर कोऑपरेशन. ऐसा नहीं है कि the doctors are only frontliners. Yes, we are treating and looking after all the serious patients here, but at the same time, I must say that if you are keeping yourself at home and keeping all the precautions and preventing the spread of the diseases, it is more than perhaps what we are doing here. Because if you limit the spread, then obviously you limit the amount of burden which is coming towards the hospital. And हमारा काम और हमें काम करना उसमें उस कंडीशन में बेहतर होगा, rather than अगर डिजीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और हॉस्पिटल्स ओवरवेलम हो जाएं, जो कि आजकल की सिचुएशन बनती जा रही है. The ICUs are fully occupied, the isolations are fully occupied. So we need to be more aware of these precaution measures. ठीक है, जो हम शायद एक महीने पहले कर रहे थे, आई थिंक उसको डबल ट्रिपल करके आपने अब इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, I think there are no more questions. So what else we can talk about? Yes, so far the promising जो study हमारे पास आई है a week back, Center of Disease Control के director ने he shared in a briefing that one of the drug, which is remdesivir, they have trialed that drug in 1,000 patients across United States and in the Europe as well, and they found it effective in reducing the length of stay in the hospital and also decreasing the mortality. उसे बाद में कमी हुई है. Exact उसका अभी paper is not published yet, so we don't know exact जो impact है उस drug का, but this drug is approved by FDA and it's currently in use, and hopefully ये market में आ जाएगी. In which city you are practicing? Okay, I'm in Karachi and I belong to SIUT, which is Sindh Institute of Urology and Transplantation. I'm a pediatric nephrologist here, which means that I see children kidney diseases, and I'm a kidney disease specialist. Okay, one of the question is by patient himself that I'm a lupus patient. Lupus is SLE patient जो होते हैं. He's saying that he has hydroxychloroquine. Okay, he wants to purchase the hydroxychloroquine, but he doesn't have prescription. Okay, so you can contact SIUT, and then we can ask the pharmacy, or you can come to SIUT. We can write prescription again, and I can buy that. ठीक है. What else? SIUT में दवा खरीदने का तरीका नहीं है. SIUT में actually we don't have to pay. SIUT is free of cost, including coronavirus screening, testing, keeping somebody in isolation, ICU facilities is absolutely free of cost. We are not charging. And if you're a lupus patient or old pediatric nephrology patient, then whatever medication you require, we will dispense from here. So you don't have to buy from here. There is no concept of buying and selling at SIUT. Some Ali Abbas, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. He's, I think, writing question. Okay. We can wait. Okay.
One of the important is asymptomatic individuals. Okay, we'll take that first. What is the best way to protect my kid from this infection? He is 11th month old, and I'm working in biomedical, and I have very close interaction with patients wherever I have to go for machine service. देखिए, the same protective measures जो एक normal condition में आपको लेने हैं, keep yourself covered with a mask. Except in few cases जिसके अंदर आपको N95 mask चाहिए होता है, वो भी those practitioners dealing with a sick patient जिसके अंदर aerosol generation होती है, nebulization कर रहे हैं, steam कर रहे हैं, suctioning कर रहे हैं, जो usually ICU setting में होती है. उसके अलावा N95 की इतनी validity नहीं है. Yes, if you have, so you can use that, but you don't need to worry about it कि आप उसको ढूंढना शुरू कर दें. You can wear the normal surgical mask and throw it in the evening. Hand hygiene, frequent washing of your hand. Make sure that when you come home, you take a shower and then your clothes जो भी हैं आपके वो आप wash करके before you meet your family and बच्चे को जब भी आप छुएं उससे पहले just take a detailed shower. Make sure that your all the surfaces at home are clean. आप ब्रीच से या 60% अल्कोहल के किसी भी सोल्यूशन से जो डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, यू कैन क्लीन द सरफेस विद देम मोर फ्रीक्वेंटली. ठीक है, अगर आप बाहर से कुछ ग्रोसरी लेकर आए हैं, अगर वो रेफ्रिजरेट हो सकती है, यू कैन पुट देम इमीडिएटली इनटू द रेफ्रिजरेटर आफ्टर क्लीनिंग, या फिर आप उनको गाड़ी में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फ्यू आवर्स, because virus won't stay longer, especially in the humid and the hot environment as well. So you can just take them out later, or if अगर आप अंदर भी लेकर आ रहे हैं, so you can just clean them with the bleach or with a disinfectant. ठीक है. एक another question है, how are you treating the COVID-19 patients in Pakistan? डिपेंड करता है कि किस सिवियरिटी की है. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर बिकॉज द इंटेंसिविस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट आर टेकिंग केयर एंड दे कैन आंसर द क्वेश्चन. वी आर यूजिंग everything whatever is recommended all over the world. We are using hydroxychloroquine, broad spectrum antibiotic, teclistamab, immunoglobulins, and alhamdulillah we are able to revert few patients, those who were on ventilators. We were able to extubate them and put them back into the isolation area. So from severe category down to moderate and mild category. So our team is really working hard day and night, regardless of Ramzan, regardless of any holidays. And this is all possible with your donations and zakat. Another question, if a patient is ready for transplant after SIUT confirmation, then why operation is delayed? देखिए, so transplant की जहाँ तक बात है, इस वक्त you are not on medication. देखिए, transplant is procedure है जिसके अंदर आपकी immunity को बिल्कुल suppress कर दिया जाता है. ठीक है, with different medications. So which means that you are even in the normal days की मैं बात बताती हूँ आपको कि अगर आपकी पेंडेमिक ना भी हो और अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, so before and after transplant you will be given many medication जो आपकी immunity को बिल्कुल suppress कर देती हैं, तो आप prone होते हैं to develop new infections. ठीक है, but in the presence of this coronavirus which is almost everywhere now, अगर हम transplant open कर देते हैं and patient को suppress कर देते हैं, the chances of getting infection is very high. So that's why we are delaying the procedure. थोड़ा सा ये pandemic थोड़ी सी control में आ जाए cases, and hopefully slowly and gradually we want to start our services back. We started our outpatient clinics. We are started our operation theaters, but definitely limited number. Gradually we will increase our number. एक और क्वेश्चन है कि जिन मरीजों की रूटीन ओपीडी लॉकडाउन के दौरान आ रही है वो क्या करें, क्या इनकी अदवात इनके घर पहुंचाई जा रही है? देखिए, ट्रांसप्लांट की मेडिकेशन, बिकॉज दे हैव टू टेक मेडिकेशन ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, सो वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांट मेडिकेशन तो हम किसी न किसी तरह उनके घर पहुंचा दें. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो आई नीड टू नो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर ब्लड वर्क. तो मैं चाहूंगी कि वो अपना रूटीन टेस्ट करवा लें, एंड देन फिर हम, क्योंकि हमें दवाओं को अप एंड डाउन करने की ज़रूरत होती है, बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है. बाकी जितने पेशेंट्स हैं, अगर उनकी मेडिकेशन मिस हो रही है, इफ दे कैन कम एंड कलेक्ट इट. अगर वो कराची ही रहते हैं
तो वो यहाँ पर आके अपनी दवा ले सकते हैं। हमारी आउटपेशेंट क्लिनिक्स खुल गई हैं, ठीक है, बट क्योंकि इंटरसिटी अभी ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ सिंध, ठीक है। बट उन केस में आप यू कैन कॉल एंड सेंड समवन, कोई आके अगर कलेक्ट कर सकता है, सो वी कैन हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। ओके, okay. The same question people were asking yesterday as well कि adolescent and children कितने susceptible हैं, the same बच्चों की एक जो age होती है till 18 years of age, उसके अंदर the chance are comparatively less, जो कि अभी देखा गया है। It's not even in Pakistan ऐसा नहीं है, बाहर भी chances और बाहर भी number of cases in children are less compared to adult population. Somebody is asking कि बच्चों में symptoms same होते हैं या different होते हैं as compared to adults? देखिए, बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट जिसे हम कहते हैं, जो नवमौलूद बच्चे होते हैं 30 days of age के अंदर उसके अंदर उन अलामात को पिक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सो बेहतर है कि अगर उनका एक्सपोजर हो गया है तो वो हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है। बड़े बच्चों में सिम्टम्स आर मोर और लेस सेम, वही बुखार होगा, गले में रुकावट होगी, गले में खिंचाव होगा, दर्द होगा, खांसी होगी, इट कैन बी रनी नोज एज वेल, जो कि अडल्ट पॉपुलेशन में रनी नोज इज नॉट अ फीचर, बट हमारे दे सेड कि इट कैन बी अ रनी नोज, इट कैन बी सियर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, बच्चे पूरे पूरे सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। अगर आप बच्चों से कहें कि स्टेज चढ़ें तो वो स्टेज नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये अलामात होती हैं जो आप पिक कर सकते हैं अगर घर में किसी बच्चे को सिम्टम्स हो रहे हैं। Faisal Malik Saab, how should I check tacrolimus level during this pandemic situation? अगर आप बता दें where exactly you are based, you can check level if you are outside Karachi. खान में भी शायद tacrolimus level होता है, लेकिन मुझे नहीं पता आप क्यों कराना चाह रहे हैं। Are you a transplant patient या आप नेफ्रोटिक पेशेंट हैं और उसके टेक्रोलिमिस आपकी मेडिकेशन में शामिल है? सो प्लीज इफ यू कैन कंफर्म देन आई विल बी एबल टू आंसर। अगर नेफ्रोटिक पेशेंट है सो यू डोंट नीड टू चेक एट द मोमेंट, अनलेस कि आप SIUT आ जाए तो आपका यहाँ चेक हो जाएगा। बट यस, इफ यू आर ट्रांसप्लांट पेशेंट, सो डिपेंडिंग कि हाउ लॉन्ग वाज द ट्रांसप्लांट, कितना पुराना है, अगर स्टेबल चल रहा है, आपका क्रेटिनिन सही है, सो वी डोंट नीड टू रश फॉर द टेक्रोलिमिस। इट डिपेंड्स, अगर आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में देयर आर सेंटर्स, वहाँ से भी आप चेक करा सकते हैं। Okay. Okay, so I think there are more questions are coming, but I will answer them later on once they are uploaded fully. The same thing, the same message I want to convey across. Hand hygiene, respiratory hygiene, wear mask if you're going in the crowded place. Crowd place पे ना जाएं तो बेहतर है, जितना भी, even with the mask and with the gloves on, with the every precaution, try to keep a distance between you, yourself and others, at least 1 meter का distance उनके साथ रहें, ये especially grocery shops में and where you are buying stuff. बच्चों को जितना अंदर रख सकते हैं, try to keep them inside. Pet से exposure ना करें, अगर especially if they are in isolation and quarantine में है, normally they are fine, they are not infected or they are not sick, तो फिर they can play with their pets. But अगर they are asymptomatic, they are infected or in quarantine, तो exposure to pets नहीं होने चाहिए. Visitors should not be allowed and they should not go to the public places, parks में बाहर walk करने के लिए. One thing I want to mention in the last, that yes, you can go out for the walk, but with the same precautions, keep the distance between yourself and others, and it's better to wear the mask. दूसरों को ये impression ना दें कि आप without any precautions bahar nikal aaye. So give them impression that you want to boost your immunity, you want to feel good, you are going out and walking, but with all the precautions. Thank you very much. If you have any question, we are more than happy to answer.